जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल। दिस इज वीकली एनालिसिस। टुडे इज संडे 30th of May 2021. So today I'm a bit late because we had the training going on, so just got a little busy. But because markets are at interesting juncture, so it is imperative that I should come online and share my views. So that is why I am here. Good evening, good evening. Jai Mata Di, Namaskar. Good to see all of you, the regular people. Good evening. I hope you had a great weekend. Okay, so चलिए शुरू करते हैं. So right now I was watching the cryptocurrency, Bitcoin and Ethereum because दोनों पे ही एक short trade मैंने दिया था Friday के दिन. So the short trade was here around 39,700. This was the short trade with a very small stop loss, and target was very huge. Target was 35,000 and then 33,000. So interestingly, once again, Bitcoin made a huge trade again successful. So we have seen a pretty serious decline coming up in the Bitcoin, and once again it will topple out like this. So आज रात को वापस 2 बजे के बाद जो है Bitcoin जब तक 39,000 क्रॉस नहीं करता है, again it will topple out. Right now it is around 36,000. Maybe it can go towards 37, 37 and half, and then again it will crack. Again it will go down. So Bitcoin is in a complete downtrend, and so is the other cryptocurrencies like Ethereum. Again, Ethereum पे भी एक short trade मैंने advise किया था Friday के दिन. That was exactly at 2850, which is almost the high, and stop loss was hardly $100. 2950 was the stop loss, and again big targets. And Ethereum has again crashed by almost 700 points. It has hit a low of 2200. 2200 का इसमें बॉटम बना है, एंड अगेन डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू ऑन द इथेरियम. अगर कोई शॉर्ट है तो आप अराउंड 2500 2600 के लेवल से जो है आप वापस से भी शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो. इट मे गो लिटिल अप एंड देन अगेन कम डाउन towards the 1900s and 2000 level. So cryptocurrency में price action and technicals, they work beautiful because it is the most liquid market going on right now with a lot of traders participating, and plus it's a purely technical market. So if you have good grip on the technicals, then you can easily trade the cryptocurrencies, whether it is the altcoin or the main coins or Bitcoin or any other crypto. All right, so chaliye, I think we have all the regular people joining us live. So good evening, a warm welcome to all of you, and let us start the weekly analysis. So what happened on Friday in the global markets? Global markets were positive. European indices were trading positive. German DAX, CAC, French market, UK, all these markets were trading positive. S&P 500 again back to 4200. जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि S&P 500 में कोई खास अप मूव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. जब भी हम ओपन करते हैं इस चार्ट को, हमेशा ये हमें लगभग 4200 के आसपास ही दिखाई देता है. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच हायर लेवल्स इन द यूएस मार्केट. यस, डाउ जोन्स जो है इसमें थोड़ी तेजी हो सकती है. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि डाउ जोन्स का जो ऊपर का टारगेट है ये अभी तक मीट नहीं हुआ है, वेयरएज S&P 500 के सारे टारगेट्स मीट हो चुके हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस डाइकोटमी, डाउ जोन्स जो है ये पॉजिटिव रहता है एंड S&P 500 जो है ये फ्लैट टू नेगेटिव रहता है. सो ये चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन द डाउ जोन्स एंड S&P 500 दे complete their respective targets, and then we can see some sort of decline. फिलहाल तो ग्लोबल मार्केट से कोई भी खास क्यूज की एक्सपेक्टेशन नहीं है. S&P 500 कैन गो इन दिस वेज फॉर्मेशन, ओके, एंड ओवरऑल 4200 से ज़्यादा मूव की उम्मीद नहीं है S&P 500 पे. मोर और लेस इट शुड रोटेट अराउंड द 4200 mark. Now coming back to our markets, and before coming back to our markets, let me just have a word about the US dollar. So Friday के दिन जो है US डॉलर में एक अप मूव देखने को मिली. So US डॉलर जो है इसने, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि US डॉलर शुड बाउंस बैक and it should break this falling trend line. इस तरीके से maybe it can make a falling wedge, and once we are successfully above these levels, that was an initial breakout, but we need a good breakout like this,
and only in that case US dollar should start to go up. ऑलरेडी यूरो और जीबीपी यूएसडी जो है ये दोनों में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की शुरुआत लग रही है. यूरो भी नेगेटिव था एंड ब्रिटिश पाउंड भी नेगेटिव था. सो इफ यूएस डॉलर स्टार्ट्स टू गो अप देन इट मे फेस सम प्रॉब्लम इन द इमर्जिंग मार्केट स्पेस. नाउ लेट अस कम टू निफ्टी. सो निफ्टी में क्या सिचुएशन है? निफ्टी में जो है ऑल टाइम हाई हिट हो चुका है एंड इट हैज आल्सो क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट द ऑल टाइम हाई. बट द प्रॉब्लम इज विद सेंसेक्स बिकॉज सेंसेक्स में अभी भी ऑल टाइम हाई नहीं हिट हुआ है एंड सेंसेक्स हैज टू ट्रैवल अ लॉट. सेंसेक्स में भी काफ़ी डिफरेंस है. इनफैक्ट सेंसेक्स अभी तक अपने पुराने डिक्लाइन के 78% फिबोनाची रेजिस्टेंस पे ही है. Okay, so if I open the chart of Sensex, this is the chart of Sensex that we are going to follow, and here we can see this is the time window that I had projected for a potential top in the market. That time window is completed, and Sensex Nifty has made all-time high, but we need to see what happens over here. Okay, so Sensex has closed just at the in the form of a doji at the 78% Fibonacci retracement of this entire decline. Okay, but Nifty has made a new high. Now this is looking exactly like the Dow Jones and the S&P 500. यहाँ भी इस मार्केट में भी ये डाइकोटोमी देखने को मिल रही है और हमारे मार्केट में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि जब तक मैं सेंसेक्स को ज़्यादा कंसिडर करता हूँ स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अप टॉप्स एंड बॉटम्स. सो सेंसेक्स हैज स्टिल नॉट मेड अ न्यू हाई. नाउ दैट can also be bullish for Nifty, that can also be bearish for Nifty. Why? Because see, if Sensex actually has to make a new high, then Sensex will start to move up. That will automatically drive the Nifty on the higher side. Correct? Now, whereas if Sensex is not supposed to make a new high, it will start to fall from here, and that may again create a failed breakout, or you can say a false new high on the Nifty, and again Nifty will go down. So over here मैंने थर्सडे रात को भी कहा था कि सेंसेक्स को देखना बहुत जरूरी है. जब तक सेंसेक्स अपना एक न्यू हाई नहीं बनाता है, वी शुड बी वेरी कॉशियस इन दिस मार्केट. डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम it is the Sensex that makes the new high or the bottom or a significant level. Also over here we need to keep in mind one thing, that this earlier trend line support that has gone that was broken, now it has been reclaimed, so that is good for the Sensex. So let us see what's the plan for next week. Now if I open the chart of Nifty, one thing is very certain. See, ये चीज मैंने थर्सडे रात को भी आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्राइडे के दिन अगर मार्केट गैप अप से खुलता है, तो मैंने आपको थर्सडे की वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कोई भी ब्रेकआउट, चाहे वो इस तरीके का हो, चाहे वो ऑल टाइम हाई की ब्रेकआउट हो, एनी ब्रेकआउट इफ इट इज हैपनिंग थ्रू गैप, this is called as a breakaway gap. If any breakout is happening with a gap, then you should not be short in that market. Okay, you should not be short in that market. Try to go long. If you don't want to go long, then at least stay aside, but do not short this market if the gap is not filled. So जब तक ये गैप के नीचे बाजार नहीं आता है, इसको आप शॉर्ट के तौर पे मत कीजिए. हो सकता है बाजार बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, हो सकता है बाजार बहुत ऊपर चल जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट शॉर्ट शुड बी क्रिएटेड ओनली वंस वी स्टार्ट टू ट्रेड बिलो द गैप ऑफ फ्राइडे. Okay, so in that sense, we have a very objective level of 15,400, or you can say 15,390, somewhere over here. That 15,390 जो एक गैप का हिस्सा है, जब तक ये इस गैप के नीचे नहीं क्लोज होता है, we should not short this market over here. Why? Because I have already explained that whenever the all-time highs or all such levels are broken with the form of a gap, that has a tendency to do two things. Number one, either it will initiate a new leg of upside which can run up for long time, okay, and huge targets can come, or it can create a bearish engulfing type of a scenario, which means that market can remain little up, but after a few days it may go on the downside. Okay, that can be one scenario. So that is why if markets has to come down, it will invariably come below the gap. तो जब तक एक गैप के ऊपर है, इसमें बुलिश रहेंगे, और गैप के जब नीचे आ जाएगा, तब इस मार्केट को जो है हम शॉर्ट साइड में प्ले करेंगे. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट.
बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट इस तरीके से 1000 पॉइंट की निफ्टी रैली कर दे, ओके, एंड आप यहाँ पे शॉर्ट में ट्रैप होकर बैठे रह जाओ. सो ऑलवेज थिंक ऑब्जेक्टिवली. सो हियर वी हैव अ ऑब्जेक्टिव सिनेरियो, दैट इज व्हाई our rule will say that till we do not close below this gap, and I believe to make things better we should keep a level of 15,390. 15,390 के नीचे ही हम बेरिश होंगे. उसके ऊपर जब तक है तब तक आप जो है इस मार्केट को ऊपर साइड में प्ले कर सकते हैं. याद रखिए कि सेंसेक्स अभी तक न्यू हाई नहीं बनाया है. दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. वो चीज डिपेंड करेगा कि इस वीक में हम कैसे बिहेव करते हैं. अगर सेंसेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है, दैट मींस निफ्टी विल रन अप मच मोर हायर टुवर्ड्स 15,770. इतना यहां तक आ जाएगा निफ्टी. In fact, that is the first target on the upside, 15,770. And if you remember, my entire zone for distribution is nothing but 15,470 and 15,770. राइट, ये जोन मैं पिछले 4 महीने से दे चुका हूँ. लास्ट टाइम हमने एग्जैक्टली इसी लेवल पे टॉप बनाया, एंड देन वी स्टार्टेड दिस ह्यूज डिक्लाइन which ran almost for 2.5 months, and after that we have started this rally which was initially looking like a bearish channel, okay, but then recently last week में हमने इसको ब्रेकआउट किया है. सो ये अभी भी पूरा जोन है डिस्ट्रीब्यूशन का, 770 तक का स्कोप है. तो जब तक हम 390 के ऊपर हैं वी शुड ट्रेड पॉजिटिवली, और वी शुड स्टे असाइड फ्रॉम द मार्केट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, okay. And also one more thing, if you are trading on the long side, please keep stop loss. Do not trade without any stop loss, and do not take much leverage, okay. Do not take much leverage. Be safe than sorry. Fine. So this is the texture of this market as of now, and let us see what will be the trading mob levels, etc. Now, one more thing I would like to cite is that we have a cycle date coming on 8th of June. So around 8th of June, it can be 7, 8, 9, but precisely 8th of June जो है ये हमारा प्राइस और टाइम एक टारगेट आ रहा है जो है 15,580, 15,580. Also here we have this green line which is a long term resistance line coming from far away, okay. So that is also coinciding at 15,580. So it will be very interesting to watch this area. It will be very interesting to watch this area because last time हमने यहीं से एक डिक्लाइन की शुरुआत की थी. तो यहाँ पे जो है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ से बाजार गिरता है कि नहीं गिरता है. अगर यहाँ से बाजार एक टर्न शुरू करता है सो हमारा नीचे में पहला टारगेट जो है वो होगा 15,170, जहाँ से ये सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट किया है, ओके. सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी राइट डाउन द वीकली लेवल्स. सो द वीकली मेक और ब्रेक लेवल, the weekly trend deciding level should be your gap. ये जो फ्राइडे का गैप है, ठीक है. सो इसको हम लिख देंगे 15,000. आई वुड राइट 15,000, लेट अस राइट 380. थोड़ा सा बफर देते हैं, 15,380. दैट शुड बी द मेक और ब्रेक लेवल. फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड विल बी योर 15,580, which is nothing but this zone over here, which was the previous top. And second target 15,770. 15,770, that will be the second target. So two targets are there on the upside, out of which we have to be very careful at 15,580 because this is the trend line resistance coming up over here, okay. Now on the downside, if we ट्रेड बिलो दिस, अगर हम फ्राइडे के बॉटम के नीचे जाते हैं, स्पेशली अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे जाते हैं, क्लोज करते हैं, तो फिर मार्केट में एक सडन और शार्प यू टर्न आना चाहिए, ओके. सो इन दैट केस वी विल टर्न बेरिश कीपिंग व्हाटएवर हाई इज मेड एज अ स्टॉप लॉस, एंड आवर फर्स्ट टारगेट विल बी रीटेस्ट ऑफ दिस एरिया विच इज 15,180, 15,180. ये हमारा पहला टारगेट होगा. एंड सेकेंड टारगेट शुड बी दिस लेवल जो लास्ट सपोर्ट है इस बाजार का, स्टैंडिंग एट 14,877, okay. So two targets will be there on the upside, two targets will be there on the downside. Noticeable point is that you have to keep Friday's low or Friday's gap, the bottom of that gap, as a
प्लेस टू डिसाइड फॉर द शॉर्ट ट्रेड। इसके नीचे हम बेरिश हो जाएंगे, और जब तक ये सेफ है तब तक मार्केट तेजी में रहेगा। 15,580 के लेवल को ध्यान से देखना है। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, and that is creating some sort of confusion as well, is coming from the Nifty futures chart. Okay, so if we look at the daily chart of Nifty, all of you must remember what happened on technical glitch day. So this was the day where technical glitch happened on 24th of February. Okay, now if you look on that day, the market had to shut down. Market started after 3:30 and all. So due to some random orders, the actual high that got printed on Nifty futures is greater than the spot high. यानी निफ्टी स्पॉट पे ये हाई बना था, इस दिन का हाई है, बट निफ्टी फ्यूचर्स पे इस दिन का हाई है। नाउ इंटरेस्टिंगली दिस लेवल ऑन द निफ्टी फ्यूचर्स कम्स टू, आई थिंक इट इज 15,525। it is approximately, it is yeah, 15,525. Now this level I will be watching very closely tomorrow. What is this level? This level is 15,525. Okay, now this level I will be watching very closely for Monday and Tuesday. Why? Because see, number one, whenever there is a dichotomy in market, dichotomy मतलब कि सेंसेक्स अभी काफी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बैंक निफ्टी अगेन काफी नीचे है, प्लस निफ्टी फ्यूचर का ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको कंसीडर करोगे या इसको ऑल टाइम हाई कंसीडर करोगे। अगर आप चार्ट्स को देखते हो, अगर आप वैल्यूज को देखते हो, तो निफ्टी फ्यूचर का ऑल टाइम हाई तो ये हुआ, correct? So that means Nifty future is still, to make the new all-time high. So because of this dichotomy between this Sensex, this Nifty, this Bank Nifty, and this Nifty futures, we should be very cautious, because जब तक इन तीनों में, और स्पेसिफिकली एक सेंसेक्स में, जब तक एक कंप्लीट एक न्यू हाई नहीं बनता, थोड़ा सा सावधानी के साथ चलने में ही अकलमंदी है, because very few people will observe on all these charts. Most of the people consider Nifty spot only, but I consider Sensex as the most reliable in such times. Okay, now why I am going to watch this level specifically for tomorrow and Tuesday is because from Tuesday, which is 1st of June, the peak margins are going to kick in, right? Now as of now we don't know how markets will react. 75% of the peak margin limit will be hit, so how markets will react, it is happening just after the rollover, just at the new high area, so it is going to be very tricky to have a premonition about what is going to happen. So it is better that we should be cautious for next 2 days, and considering this type of a dichotomy, और भी सावधानी रखने की जरूरत है. Okay, because after this peak margin hits, there is going to be some textural change in this market. ये बोलना कि बाजार में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, it is utter foolishness. There has to be a significant change in the way these markets move, especially in the short term. There will be a significant change in how the expiries are going to happen. Okay, so all these things will have to be watched carefully, assessed for at least 1 month, and then we can come up with some sort of interpretation कि पीक मार्जिन के बाद किस तरीके से मार्केट शेप अप कर रहा है. ठीक है, सो 100 बात की एक बात कि इस लेवल को हम वॉच करेंगे केयरफुली. कल और परसों के दिन अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ वगैरह होती है तो हमें थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, बिकॉज निफ्टी फ्यूचर्स पे ऑल टाइम हाई एज पर द चार्ट इज दिस एंड नॉट दिस. फाइन. ओके, कमिंग बैक टू द नॉर्मल डिस्कशन. The intraday mob level for tomorrow, ये तो हो गया weekly analysis. Last week candle was good, but the range was quite small, I would say. And on the Bank Nifty chart, the range is even smaller. ठीक है? The Bank Nifty, the range is even smaller. So I will come to Bank Nifty after discussing the mob levels for tomorrow. So कल के लिए, Monday के दिन के लिए Nifty spot पे mob level होगा 15,415. So this is the most important trading level for intraday for tomorrow, that is 15,415, and our first target should be 15,525. okay, 100 points jump above the Friday's high, and second target can be 15,580. so two targets are there on the upside, of which I believe
525 can come, but 580 is a very doubtful. 580 is a very doubtful. 15,525 can come, which is also the level on the Nifty futures, and that level will have to be watched very carefully. Okay, so that is the mob level for tomorrow. If we start to trade below this, then we should, I think very easily we should go towards 15,370, and second target should be 15,330. Okay, so these two targets are there on the downside, these two targets are there on the upside, out of which 15,525 is the level to watch for. अगर वहां पे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, आपको वीकनेस दिखता है, तो आप यहाँ पे इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो. 580 का आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड देन दीज थ्री विल बी दी टारगेट्स ऑन द डाउन साइड. फाइन. सो वेरी इजी एनालिसिस फॉर टुमारोज सेशन. वीकली एनालिसिस आई हैव डन. जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ. अगला टाइम साइकिल है 8 जून का, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग something to happen by that time cycle. Either Nifty will peak out or Nifty will start the downtrend. So we have to be cautious. Profile wise, we have a very smooth bell-shaped profile, which means कल के दिन जो है एक अच्छा trend होना चाहिए. It can also be a engulfing type of a candle as well. It can also be a trend day. अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग चीज हुआ है. कल है मंथली क्लोजिंग. सो बैंक निफ्टी की अगर हम मंथली चार्ट को ओपन करते हैं तो हमने ये चीज पहले भी डिस्कस किया हुआ है दैट दिस ट्रेंड लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन फॉर बैंक निफ्टी, बिकॉज ओवर हियर वी हैव अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑपरेटिंग. सो बैंक निफ्टी जब तक इसके बाहर नहीं निकलता है, बैंक निफ्टी में प्रेशर बना रहेगा. दैट इज ऑलमोस्ट श्योर. ओके, सो इफ द प्रेशर इज गोइंग टू बी इंटैक्ट ऑन द डाउन साइड, योर प्रीवियस ऑल टाइम हाई इज अ मेजर सपोर्ट नाउ. ओके, जो कि फिलहाल तो अभी बहुत नीचे है, बट यू कैन हैव one more candle like this. If the pressure remains, if the pressure is exerted, आपको एक और कैंडल इस तरीके से देखने को मिलेगा. So if this is going to be the case for the month of June, and we have rolled over at the high, almost the higher levels, so this is the place to be extremely cautious. क्योंकि यहाँ से अगर ये फेलियर होता है, यहाँ से अगर एक नीचे की तरफ ये चलता है, तो अच्छा खासा डाउनसाइड पहले हमें देखने को मिल सकता है. ओके, so in bank nifty we have to be both, I would say bulls and bears both have to be cautious, क्योंकि जो हिसाब से जो वीकली क्लोजिंग है, ये छोटा कैंडल है. इट्स अ स्मॉल वीकली कैंडल. सो whenever you have a small weekly candle, it can generate a big candle. Small candles generally lead to a big candle, right? And we have closed at a good level. I would say it is a good closing. It's a very good closing. But on the daily chart, थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ है. कोई बड़ा तकलीफ नहीं है, बट छोटा सा तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिक्लाइन की थी, एंड अगेन हियर सम प्रॉफिट बुकिंग हैपेंड, एंड वी आर अगेन हियर. ओके, एंड लास्ट टाइम भी हमने इसी ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे देखा है वर्क करते हुए. यहाँ पे एक मेजर रैली जो है बजट के टाइम पे यहीं से आई थी, एंड लास्ट टाइम भी एक फॉल जो है इसी ट्रेंड लाइन से आया है. सो दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट इग्नोर. नेवरदलेस हम ट्रेडिंग लेवल्स किस तरीके से निकालेंगे बैंक निफ्टी में, आ जाइए उसके तरफ जो है डिस्कशन करते हैं. सो मेरे ख्याल से जो मॉब लेवल होगा, जो वीकली एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, ये हमें रखना चाहिए फ्राइडे की हाई को, विच इज योर 35,470. दैट इज द हाई. सो दिस शुड बी योर वीकली मॉब लेवल, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, वी हैव दिस एंटायर स्पेस टू कैप्चर, एंड दिस हाई इज अ वेरी सीरियस हाई विच इज नियरली 36,400. सो ऊपर में हमारा एक टारगेट होगा 36,400. दैट इज ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड. आई विल ओनली कीप दिस एज माई टारगेट. इस वीक के लिए मैं इसी को टारगेट रखूंगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा अपसाइड आ जाएगा, तो अभी पता नहीं उतना होगा कि नहीं होगा, बट यस, यहाँ तक की स्कोप है, यहाँ तक की स्कोप है. एंड अबाउट 35,470 दिस इज प्रीटी मच पॉसिबल. ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे इस लेवल को, जो कि है आपका 34,500, एंड सेकेंड हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे विच इज 33,800.
ओके, सो दो टारगेट होंगे नीचे में एंड एक टारगेट होगा ऊपर में। अगेन वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी कॉशियस। ये अज्यूम नहीं कर लेना है कि ये 1000 पॉइंट की रैली आएगी, जब तक इसके ऊपर हम सक्सेसफुली नहीं चलेंगे ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। ओके, नाउ ऑल्सो बैंक निफ्टी में जो HDFC ट्विंस हैं दे आर एट सम रेजिस्टेंस, प्लस ऑन फ्राइडे वी गॉट अ बैड न्यूज ऑन HDFC ऑल्सो। अगेन RBI ने जो है एक 10 करोड़ का फाइन उनको स्लैप किया है। सो HDFC कैन कम अंडर प्रेशर। अगर HDFC अंडर प्रेशर आता है तो अगेन बैंक निफ्टी में डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। फाइन, सो वीकली एनालिसिस कुछ इस तरीके से था। अब हम बात करते हैं कि फ्राइडे का प्रोफाइल कैसा था। सो फ्राइडे को लास्ट में एक अच्छी जेन्युइन एक बाइंग आई है, वी सॉ दी 45 degree angle of the profile, it's a bell shape, so very nice, some buying has happened, volumes were also quite greater towards the end, यानी some यहाँ पे अच्छी buying कुछ हुई है। okay, now with this in perspective, but overnight that HDFC news came, so अगर इन दोनों को हम combine करते हैं तो या तो HDFC की news irrelevant है या तो फिर यहाँ पे you know किसी ने जल्दबाजी में अपने शॉर्ट को कवर कर लिया एंड नाउ इट शुड गो डाउन। सो वट एवर इट इज, ओपनिंग डिसाइड करेगा। अगर हम ओपनिंग गैप अप के थ्रू करते हैं तो इट विल अगेन गो हायर एंड मेक 35,500 का लेवल जो है ये टेस्ट कर लेगा बड़े आराम से। अगर ये नीचे की तरफ खुलता है तो फिर थोड़ा सा गिरावट पहले होना चाहिए, थोड़ा सा गिरावट होना चाहिए 34,800 34,600 के आसपास जो है गिरावट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेट नेट बाइंग है और अगर नीचे हम खुलते हैं तो दे विल स्टार्ट टू लिक्विडेट, क्योंकि HDFC की न्यूज भी थोड़ी सी नेगेटिव है। ठीक है, तो कल के लेवल्स को हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम चलेंगे स्टॉक्स की डिस्कशन पे। ओके, सो द मेक और ब्रेक लेवल फॉर the make or break level for bank nifty spot should be the lower levels, which is this area जहां पे पूरा दिन इसने सपोर्ट लिया है। तो मेक और ब्रेक लेवल हम लिख देंगे 35,100 पे, एंड अपसाइड में पहला हम टारगेट रखेंगे हाई अबव द फ्राइडेज हाई विच विल बी 35,500, एंड सेकेंड टारगेट हम रख देंगे 35,700 that will be the second target। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड टारगेट। ऑन द डाउन साइड हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 34,800 and second target should be this, which is 34,600। so these two targets are there on the downside, two targets are there on the upside। opening जो है that will be quite important। अगर हम गैप अप खुलते हैं तो आप ऊपर के साइड में इसको देख सकते हैं, बिकॉज नेट इन्वेंट्री जो है ये एकदम न्यूट्रल है। ओके, एंड अच्छा मूव का अंदाजा इसमें मिल रहा है। सो दैट इज द अपडेट ऑन द बैंक निफ्टी चार्ट। सो दैट्स ऑल प्रीटी मच ऑन द इंडेक्स फ्रंट। एक बार हम MCX की तरफ आ जाते हैं तो MCX में अगर हम देखें तो कपल ऑफ गुड थिंग्स हैव हैपेंड। क्रूड ऑयल जो है एकदम अच्छे तरीके से बिहेव किया है, ठीक है, एंड क्रूड ऑयल में हमने बहुत ही शानदार ट्रेड इसमें हमने कैप्चर किया है पिछले एंटायर 1 वीक में। इफ आई ओपन दी कमोडिटीज विंडो, दिस इज द वेरी नाइस रेंज जहाँ पे हमने 2-3 बार इसमें एक शॉर्ट ट्रेड मिला था। देन ऑन फ्राइडे आई वांट पीपल नॉट टू, सॉरी ऑन थर्सडे आई वांट पीपल टू कवर देयर शॉर्ट्स। इनफैक्ट यहाँ से लॉन्ग करने के लिए कहा था मैंने, एंड अगेन इट हैज गॉन अप। सो क्रूड ऑयल हैज वर्कड वेरी ब्यूटीफुली इन लास्ट वीक, इट वाज अ सिंपल डे। नाउ क्रूड ऑयल में एक चीज याद कीजिए कि ये एक फ्लैग ब्रेकआउट है, ओके, बट द ओवरहेड रेजिस्टेंस आर वेरी मच देयर। So I would not, go all out bullish on crude oil. I will be extremely cautious because 49.50 and 49.80, these are heavy resistance on the upside. So crude oil में बहरहाल सबसे important support अब आपका हो जाएगा ये ट्रिपल बॉटम स्ट्रक्चर which is 4760। इसके नीचे क्रूड ऑयल जाएगा तो क्रूड ऑयल में पूरी तरीके से सेल ऑफ हो जाएगा। जब तक ये रेंज होल्ड करता है क्रूड ऑयल में आप जो है एक बड़ी रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4950 और नीचे में 4750, ये 200 पॉइंट का रेंज है क्रूड ऑयल में, ठीक है। सो इस रेंज के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर ये नीचे आता है तो हम एक बार बाइंग की कोशिश करेंगे, एंड अगर ये ऊपर जाता है तो एक बार शॉर्टिंग की कोशिश करेंगे। शॉर्टिंग साइड में अगर ये पहले ऊपर जाता है और आप शॉर्टिंग की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्टॉप लॉस को इन प्लेस रखना है। ओके, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। ओके, व्हाई?
because commodities are breaking higher. So and crude has been consolidating since many days now. So कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगला नेक्स्ट लेग जो है ये क्रूड ऑयल का है. So don't get bear trap. Okay. Now gold and silver have behaved okay. I would say silver और gold में जो है मैं मंडे को ही बताऊंगा. कुछ खास ट्रेड यहाँ पे एज सच अभी नहीं है. गोल्ड जो है इसमें एक थोड़ा और बुलिशनेस इसमें आएगा. ओके. सो गोल्ड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक लगभग जो है 48,500 के आसपास ये ठीक ठाक एक बेस बनाएगा. And then gold should again go towards the 50,000 mark, 49,500 mark. So gold में इस वीक में एक अच्छा बड़ा ट्रेड मिलेगा. लास्ट वीक जो है गोल्ड में एक बड़ा ट्रेड मैंने दिया था जो कि लॉन्ग साइड में था, which was the breakout from 48,500 to 49,300 400 levels, and that got achieved very nicely. नेचुरल गैस में अभी कोई ट्रेड नहीं है. वी आर वॉचिंग फॉर रिवर्सल टू हैपन. अभी कोई नेचुरल गैस में ट्रेड नहीं है. निकल में लास्ट वीक मैंने आपको 1240 के ऊपर जो है लॉन्ग सजेस्ट किया था एंड निकल हैज वर्कड ब्रिलियंटली. निकल जो है लगभग 100 पॉइंट की रैली कर चुका है. कॉपर में फैंटास्टिक अपमूव की हमने डिस्कशन की थी लास्ट वीक में. 737 738 से अपने लॉन्ग सजेस्ट किया था एंड कॉपर हैज आल्सो मूव 30 पॉइंट्स इन फेवर. सो कमोडिटीज पे फिलहाल इतना ही अपडेट मैं दूंगा एंड लेट अस मूव वेरी क्विकली टुवर्ड्स द स्टॉक सेक्शन. I will take only few stocks today because Saturday and Sunday we had training, so बहुत ही हेक्टिक आज स्केड्यूल हो चुका है. बट थोड़े बहुत स्टॉक्स हम ले सकते हैं. ठीक है. बैंक ऑफ बड़ौदा. ओके. सो फर्स्ट क्वेरी कमिंग अप इज बैंक ऑफ बड़ौदा. दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके. इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, फेसबुक पे जुड़ जाइए, बिकॉज कभी यूट्यूब वगैरह बंद हो गया तो हम वहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी लाइव कर सकते हैं. ऑलराइट. सो द बैंक ऑफ बड़ौदा इज certainly looking bullish. What you can do is you can keep a trailing stop loss of 77 and you can aim for the recent highs near 100. Okay. Now one thing I would like to say is that keep trailing these counters, okay, because trailing is very important. Also, if you are getting good profits, do not shy away from booking profits. ये मत सोचो कि मार्केट बहुत तेजी में है और मैं अगर बुक कर लूंगा तो ये भाग जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. आपको अगर अच्छा मिल रहा है तो आप बुकिंग करो. डोंट वरी अबाउट दिस मार्केट्स. दे विल कीप कमिंग बैक. मार्केट्स ऑलवेज कीप मूविंग बैक एंड फोर्थ. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL has witnessed a profit booking. लास्ट टाइम इसमें मैंने 150 और 155 का जो ये टारगेट आपको दिया था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कहा भी था आपको कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना क्योंकि वी आर अप्रोचिंग द प्रीवियस ऑल टाइम हाइज. ओके. सो BEL में अगर आप अभी लॉन्ग में अटके हो तो गॉड ब्लेस यू, बिकॉज दिस वाज नॉट सपोज टू बी अ प्लेस टू गो लॉन्ग. इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग अप दिस स्टॉक देन आई थिंक फ्राइडे के नीचे जैसे ही जाता है आपको एक बार बुकिंग कर लेना चाहिए. That's it. Okay. आप लोगों को मैंने बुकिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक आपको बताया हुआ है. प्रीवियस डे बॉटम को ट्रेल करो. अगर आप प्रीवियस डे बॉटम को ट्रेल करते हैं तो इसी दिन 156 रुपीज में ही आपका ट्रेलिंग से कट जाता. लिटरली एट द टॉप आपको ये एग्जिट भी हो जाता. ठीक है. सो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस देखेंगे. यहाँ पे मैंने जो है एक विंडो एक ऐड कर दिया है जिससे हमें किसी भी स्टॉक का कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखेगा. 1 वीक में -8% है ये स्टॉक. YTD 23% अप है. ओके. एंड 1 ईयर यानी आज से ठीक 12 महीने पहले के हिसाब से देखेंगे तो 115% है. सो दिस विल हेल्प अस टू जस्ट गेट अ फील ऑफ द स्टॉक्स कि कितना ये मूव कर चुका है. सो दैट्स अबाउट द BEL. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट नाउ बुलिश. बट लेट अस सी. 34 का इसमें एक टारगेट मैंने आपको दिया था एंड आई थिंक द हाई ऑफ फ्राइडे इज एग्जैक्टली 434. करेक्ट. सो दिस वाज द फिबोनाची लेवल दैट वी हैड एक्सपेक्टेड. याद है आपको 410 के ऊपर क्या कहा था मैंने कि 434 दैट इज द टारगेट एंड दैट टारगेट वाज हिट. दैट इज द मिनिमम अपसाइड टारगेट. ओके. सो अब बैंक SBI में 435 के ऊपर ही नया अपमूव जनरेट होगा. SBI में लेट मी वार्न यू कि यहाँ पे भी very cautious. See, there are many people who are getting extremely bullish on SBI. और मैंने इस स्टॉक को पिछले 7-8 साल में जितना ट्रैक किया मैंने ये देखा कि जब भी ये न्यू हाई बनाता है
it always disappoints. हो सकता है इस बार different हो, because all these stocks are rallying, maybe because lifelong तो ये behavior नहीं करेगा. But as a trader, this is not the place to go extremely bullish on this stock, where the entire data is suggesting that you should be cautious. Okay, so this is my personal view, that be careful in this stock. अब fresh जो up move है ये 435 के ऊपर आएगा, and we have one target near the 470 mark, जिसके बारे में हम एक बार डिस्कशन कर चुके हैं. सो अगर ये 435 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, okay, then the room for 475 will open, and in subsequent days we can travel towards the 475 also. बट एज आई ऑलवेज से कि बाजार में टारगेट मत देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखो. तो अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखते हो तो यहाँ पे लॉन्ग उन्हीं को करना चाहिए जो टेक्निकली प्ले करते हैं, जो स्टॉप लॉस के साथ प्ले करते हैं, जो मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को. ओके, बाकी लोगों को वेट करना चाहिए. जब नेक्स्ट टाइम सपोज इसमें कोई एक अच्छी गिरावट वगैरह आती है, तब जो है उस वक्त हम इसको बाय कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ बेटर सेफ देन सॉरी. एसबीआई में अगर यहाँ पे फंबल होता है तो ये डब्ल्यू शेप की पैटर्न जो है बनने की फुल ऑन चांसेस है, वेरी वेरी हाई चांसेस. सो कीप एन आई ऑन 435, दैट इज अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एनबीसीसी नेक्स्ट स्टॉक है एनबीसीसी का. सी एनबीसीसी जो है ये अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, फ्लैग टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन है, एंड इट में ब्लास्ट ऑन द अपसाइड. तो इसको आप सपोज अगर अभी आप लॉन्ग है, ऑलरेडी आप लॉन्ग हो, तो आपको 47 का इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस. एंड द डे इट ब्रेक्स अबव 51, दैट डे यू विल सी अ बिग रैली, एंड ये जो है एक नए ऑल टाइम हाई, यानी रिसेंट ऑल टाइम हाई के आसपास, लगभग जो है 60-65 के आसपास ये जाएगा. अगर हम वीकली चार्ट्स देखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, दैट द रेंज हैज एब्सोल्युटली श्रंक. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डिजायरेबल. ये बहुत ही एक बुलिश पैटर्न है. तो इट जस्ट नीड टू क्रॉस द 50 मार्क. 50 के ऊपर चलना शुरू किया तो ये चीज़ आपको 60-65 आराम से दिखा देगा. ठीक है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे मेरे ख्याल से आपको रखना चाहिए 47 शुड बी अ गुड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस. See guys, today I will not be able to take much queries, so because extremely tired हो चुका है last 2 days because of the training. So I'm just going to take couple of more queries और फिर हम wind up करेंगे. अगर कोई चीज़ आपकी urgent है तो आप super chat कर सकते हैं. Okay, now talking about this stock Muthoot Finance, the pattern is very very clear that if we do not go above 1300 mark, it can again fumble. So this is the heavy resistance since last many days, and overall this is making a triangle pattern, जिसमें every time it is taking resistance near the 1300 mark. So अगर आप इसमें लॉन्ग हो तो आपको एक बार निकल जाना चाहिए. अगर ये 1300 को ब्रेक कर रहा है तो यू कैन बाय इट बैक. Okay, if you are a short term trader, if you are a long term trader, then you should continue to hold, because I believe Muthoot Finance is a very robust chart structure, and sometime in future it will start a huge breakout that will take the stock at least towards the 2000 mark. So if you are a long term trader, you can continue to hold. If you are a short term trader, try to book profits in 1300 mark. अगर 1300 के ऊपर एक अच्छी ब्रेकआउट होती है तो आप इसको बाय बैक कर सकते हो छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ. ठीक है, ये जो है आपका व्यू होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए फॉर दिस स्टॉक मुथूट फाइनेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेरी दैट आई कैन सी इज कैप्लिन पॉइंट लेबर. So this is the next stock on my screen, कैप्ली पॉइंट. सो ये स्टॉक में पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग आ रही है, बट ऑन अ वेरी वेरी ड्राई वॉल्यूम्स. सो ज़्यादा इसमें कुछ दम नहीं है सेलिंग में. सो आई वुड सजेस्ट 570 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है, इसको आप ट्रेल कीजिए, एंड आई बिलीव 570 विल बी प्रोटेक्टेड, एंड वंस अगेन आपको न्यू हाइस इसमें देखने को मिलेगा. एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये स्टॉक अगर 700 के ऊपर चलने लगा, ठीक है, तो इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी अपसाइड आएगी. सो 700 इज अ गुड रेजिस्टेंस, एंड व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू book your profits for once at the 700, because there is a long term resistance coming at the 700 mark. Okay, so that is something which you have to keep in mind. Fine, so that is the update on the stock. Next stock है Amara Raja Battery. Let me take quick
analysis. Let me do the quick analysis. So Amar Raja battery is very bearish. If you are a long trader, keep a stop loss of 730 and you can expect one up move towards 775. Last time मैंने स्टॉक को bearish declare कर दिया था and if you remember मैंने आपको clear cut कहा था कि ये bullish अगर हुआ भी तो maximum 820 जाएगा. Stock is in a very very strong downtrend. Fine. So stock अभी भी डाउन ट्रेंड में है. डू नॉट ट्राई टू डू बॉटम फिशिंग, इट कैन बी वेरी डेंजरस. बट राइट नाउ अगर आप लॉन्ग है तो 730 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो एंड होप फॉर द बेस्ट. यू कैन ओनली होप, यू कैन होप दैट इट गोज टू फिल द गैप नियर 790. कमोडिटी बता चुका हूँ. कमोडिटी को रिवर्स करके देख लीजिए, सॉरी रिवाइंड करके देख लीजिए. कमोडिटी के बारे में मैंने अभी अपडेट दिया है. ओके. Next query है power grid. What I'm thinking is I'm thinking to launch a new channel, a YouTube channel जहाँ पे मैं commodities और cryptocurrency के बारे में separate discussion करूँगा and will keep this channel only for NSE. Power grid जो है it has again retraced to some extent. Power grid में I think 240 was a good level. यहाँ पे trend line resistance भी है. What you can do right now is you can trail to either, you know, what you should do is exit below 223 for the time being. Okay. Right now it is little dicey in the sense that you know, it can take a shape of a bull flag and later on it can break out. That can also happen like this. ठीक है. But ये एक अच्छा लेवल था बुकिंग करने के लिए. इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखो, आपको काफी फायदा होगा. सो फॉर नाउ if you can afford some genuine trailing stop loss, I would suggest, you know, hold till this 216. ठीक है. या fresh buying कर रहे हैं तो यहाँ पे आप buying करो. It is a very good support, amazing support है. And next round में, you know, suppose it can do like this and you will get one more exit opportunity. अगर अगले राउंड में ये ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा. ठीक है. ओवरऑल लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट एग्जिस्ट नियर 215 टू 210. उसके नीचे इसको होल्ड नहीं करना चाहिए. वहां पे एक फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं आप 5-6 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एंड टारगेट विल बी अराउंड दी 237 एंड 245. दिस विल बी दी टारगेट्स. 3i Infotech. नेक्स्ट क्वेरी है 3i Infotech. लेट मी ओपन दी, oh I'll have to type it here. 3i Infotech. ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम. 3i Infotech जो है ये बहुत डाइसी सिचुएशन है. राम भरोसे चल रहा है ये स्टॉक. आप इस पे जो है ₹8.5 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हैं. अगला स्टॉक है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इस PNG. ओके सो PNG सिंबल इज व्हाट? Okay, Procter and Gamble, PGHL. Okay, so the symbol is PGHL. So this is a FMCG counter. As of now, it's bearish. Nothing to add. But if you are a long-term investor, no need to worry. आप इसको hold कर सकते हो. इसका एक अच्छा support है 5,700 पे. I don't think इसको ये break करना चाहिए. Okay, I think the 5,700, 5,500, that's a pretty good level. Stock will hold and eventually go up. So it's a long term counter. इसमें आप short term की उम्मीद कुछ मत कीजिए. ये long term counter है. And if you see the long term chart, it has always been a very very healthy uptrend. Okay. Now such type of stocks, they are cyclical in nature. They generally don't move for many years. And once they start to move, they will move for few years. So ये stock जहाँ तक मुझे लगता है ये downtrend में थोड़ा धीरे धीरे continue करेगा. And don't try to average as of now. अगर ये स्टॉक आपको काफी नीचे मिलता है अराउंड 5,000 और 4,500, that is the time to average this stock. अभी जो भी आपका माल पड़ा है आप इसको रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, but do not average as of now. Okay, एवरेजिंग के लिए भी अच्छा प्राइस होना चाहिए तो सही होता है. SRF, नेक्स्ट क्वेरी इज SRF. See, SRF is bullish. There is no doubt about it. SRF is my most bullish counter in entire India. And last year, I had suggested this stock around 2,500 itself. My target was huge target. अभी भी मेरे target का ये कुछ नहीं achieve हुआ है. Okay, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ.
Now, when you see a stock like this which is correcting and it is coming back above the 21 EMA, that is a bullish sign. So अगर आप इसमें लॉन्ग हैं तो आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए 6175 एंड टारगेट शुड बी दिस एंटायर हाई. तो एसआरएफ में आपको 7000 का लेवल जो है बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है. याद रखिए स्टॉप लॉस पे अब फोकस होना चाहिए, टारगेट पे नहीं. स्टॉप लॉस पे जो कॉम्प्रोमाइज करेगा वो ट्रैप हो जाएगा इस मार्केट में. नेक्स्ट स्टॉक इज Indigo. Indigo should start to turn bullish, yes, because the COVID lockdowns are getting over, and the stock is in fact already bullish. So stock जो है अपने previous highs के आसपास ही है, and I think it is very bullish. Okay, so Indigo जो है थोड़ा सा speculative counter है, but Indigo पे यहाँ पे तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह बाय कीजिए, बिकॉज दीज स्टॉक्स आर नॉट सो मच ट्रस्टवर्दी. बट आई वुड सजेस्ट कि यस, अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो नथिंग टू वरी, बिकॉज इफ द ब्रेकआउट हैपेंस इट विल ट्रैवल एटलीस्ट टुवर्ड्स 2100. 200-300 पॉइंट की ब्रेकआउट तो होगी, तो लेटर ऑन आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. वी विल लुक टू बाय द डिप्स एंड दैट टाइम वी कैन बेनिफिट फ्रॉम द ब्रेकआउट. एज ऑफ नाउ इसमें मेरी तरफ से कोई ट्रेड नहीं है. अगर आप इसमें लॉन्ग साइड हैं तो बी कॉशियस, दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग जोन. आप इसमें 1800-1820 के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या तो ट्रेल करना है तो आप इसको 1690 पे आप ट्रेल कर सकते हैं. ओके, दैट इज अप टू यू. ऑल राइट, चलिए दोस्तों 2-3 और क्वेरीज लेंगे फिर हम आज का सेशन जो है वाइंड अप करेंगे. Somebody is telling me that it is PGHH. So I think I took the same, na PGHH, or no? Oh, I took the wrong symbol. Okay, sorry. So that was some other stock. Okay, sorry. So Procter and Gamble का ये चार्ट है. Okay. So the message is the same, that long term it's a huge uptrend. So no need to worry. आप इसमें अगर long है तो you should hold your position. इसमें ये स्टॉक बिंदास आप रहो, नो नीड टू वरी. इसमें एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये न्यू हाई ही जाने वाला है. सन फार्मा, नेक्स्ट क्वेरी है सन फार्मा. सन फार्मा में एक ब्रेकडाउन हुआ है फ्राइडे के दिन. स्टॉक जो है एक गैप डाउन के थ्रू नीचे गिर चुका है. ओके, नाउ सन फार्मा में एज ऑफ नाउ मैं सजेस्ट करूंगा कि मंडे का दिन आपको देखना होगा. मंडे के दिन जो है ना 650 के लेवल को आप देखो. 650 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका मंथली चार्ट पे. एंड मैंने थर्सडे के दिन आपको समझाया था कि सन फार्मा 650 जब तक ब्रेक नहीं करता है इट इज बुलिश. अगला टारगेट है 750. ओके, सो हम वॉच करेंगे 650 को. थोड़ा सा ये और नीचे आ सकता है, अभी 670 है तो 10-20 पॉइंट हो सकता है गिरे, बट 650 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन. आई वुड सजेस्ट इफ देयर इज नो मेजर गैप डाउन एक्सेट्रा, अगर ये धीरे धीरे आ रहा है तो यहाँ पे आप वॉच कीजिए. यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बनने के बाद आप वापस से इसको लॉन्ग कर सकते हो. इन दैट केस आपका जो स्टॉप लॉस है ये आप रख सकते हैं 620 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रखना है. सो ट्राई टू बाय नियर द 650 655. Keep a stop loss of 620, not more than that, and then the stock should start to move towards 740. That should be a good trade. Okay. Strides Pharma Star. Okay, let us see Strides Pharma में क्या हुआ है. So Strides Pharma अभी तक सेम उसी लेवल्स को सपोर्ट कर रहा है. So कोई चेंज इन व्यू नहीं है. आप इसमें 775 का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं.